મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના નવા વીસી પ્રોફેસર બી.એમ. ભણગેએ સત્તાવાર રીતે પોતાનો ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. પ્રોફેસર બી.એમ. ભણગેએ વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે પદગ્રહણ કરતા પૂર્વ ઇન્ચાર્જ વીસી પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ અને રજિસ્ટ્રાર કે.એમ. ચુડાસમા દ્વારા તેમને આવકારવામાં આવ્યા હતા. વિશ્વવિખ્યાત વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં પૂર્વ વીસી પ્રોફેસર વિજયકુમાર શ્રીવાસ્તવનું સરકારે રાજીનામું લીધા બાદ વીસી તરીકેનો ચાર્જ સાયન્સ ફેકલ્ટીના ડીન હરીશ કટારિયાને સોંપવામાં આવ્યો હતો અને પ્રોફેસર હરીશ કટારિયાની વીસી તરીકે બઢતી થતાં અત્યાર સુધી વીસી તરીકેનો હવાલો ડૉક્ટર પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ પાસે હતો. જોકે આ દરમિયાન રાજ્ય સરકારમાંથી નવા વીસી તરીકે પ્રોફેસર ડૉક્ટર ભાલચંદ્ર મહાદેવ ભણગેના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે નવા વીસીનો પણ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે આ વિવાદ વચ્ચે આજે પ્રોફેસર બી.એમ. ભણગેએ વીસી તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. યુનિવર્સિટીના પૂર્વ ઇન્ચાર્જ વીસી ડૉક્ટર ધનેશ પટેલ અને રજિસ્ટ્રાર કે.એમ. ચુડાસમાએ નવા વીસીને પુષ્પગુચ્છ આપી આવકાર આપ્યો હતો. આ સાથે પ્રોફેસર અને વિવિધ ફેકલ્ટીના ડીન પણ હાજર રહ્યા હતા. પ્રોફેસર ધનેશ પટેલ 8 મહિના સુધી ઇન્ચાર્જ વીસી તરીકે કાર્યરત હતા, પણ નવા વીસીએ યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે સમાજમાં પણ સારો સંદેશો જવો જોઈએ એમ જણાવ્યું હતું. First of all, I am thankful to government for my appointment as a Vice Chancellor of this prestigious university. It's really honor for me to lead this university. And this university has a very big history and tradition. It's one of the unique university in state of Gujarat. पहली बात, मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा चयन कुलगुरु के रूप में किया है और ये मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बात है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी को लीड करने को मिला है. ये गुजरात की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ से बहुत अच्छी ये यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री रही है और अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स बहुत जगह काम कर रहे हैं. तो इट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी टू लीड दिस यूनिवर्सिटी. नाउ दिस यूनिवर्सिटी आई विल टेक इट फर्दर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस. मैं इसका एकेडमिक एक्सेलेंस बहुत बढ़ाऊंगा. मैं बेसिकली रिसर्चर हूँ, तो रिसर्च यहाँ पे अच्छी तरह बन जाए, हायर क्वालिटी रिसर्च बने, इसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा. यहाँ से अच्छे अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश हो, जो सोसाइटी की तरफ भी जाए, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है वो यहाँ के रिसर्चर सॉल्व करे, इसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा. क्योंकि रिसर्च सिर्फ लैब में नहीं रहनी चाहिए, वो सोसाइटी में जानी चाहिए. इसकी तरफ मेरा ख्याल रहेगा ताकि जो भी रिसर्च यूनिवर्सिटी में बनती हो समाज उपयोगी हो. दूसरी बात, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए. इंडस्ट्री के प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी सॉल्व करने चाहिए. पूरे जगत में हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री दे वर्क टुगेदर एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड दैट आल्सो लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो यहाँ के जो छात्र है वो इंडस्ट्री में जाके डायरेक्टली काम कर सके, ऐसी शिक्षा देने की हमारे यूनिवर्सिटी की आगे सोच रहेगी. सो इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरेक्शन और इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन विल इंक्रीज. आई विल ऑल्सो सी दैट मोर पेटेंट्स विल कम आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ताकि ये पेटेंट्स का सब समाज को लाभ हो सके और यूनिवर्सिटी को भी इसका बेनिफिट. दूसरी बात, समाज में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी तरफ इंडस्ट्री ध्यान दे और यूनिवर्सिटी को अप्रोच करे. यूनिवर्सिटी उसका समाधान जरूर ढूंढेगी. यहाँ के अध्यापक जनों का जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनका कैसे वो रिसर्च आगे और बढ़ा सकते, उसकी तरफ मैं ध्यान दूंगा. आजकल के जनरेशन में एआई, डेटा माइनिंग ऐसे नए नए फील्ड आते रहे हैं. यूनिवर्सिटी के ये सब नए फील्ड पे ध्यान रहेगा. वहाँ की शिक्षा यूनिवर्सिटी देने की पूरी कोशिश करेगी ताकि यूनिवर्सिटी का जो अभ्यासक्रम है डे टू डे बढ़ता जाए, चेंज होता जाए, कालानुरूप उसमें बदल हो, उसकी तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.